Hi everyone, a warm welcome to all of you on Wondering Minds YouTube प्लेटफॉर्म। मैं एक बार फिर आप सबके बीच अपने रैपिड फायर सेशन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूं प्यारे साथियों। आज हम इसका पार्ट 11 यहाँ कंटिन्यू करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू जुड़े हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमने इससे पहले 10 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें आपको बुलेट पॉइंट्स बताए गए जो ऑलरेडी या तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस की फॉर्म में आ चुके हैं या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन फॉर्म्स में देखने को मिल सकते हैं। ये जो सीरीज़ है ये ना केवल यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश और किसी भी स्टेट के सेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप इस सीरीज़ को फुल कंसंट्रेशन और फुल डेडिकेशन के साथ देखें, समझें और इसके अंदर बताए गए हर एक पॉइंट को याद करें। अगर आपको हमारा बताया कंटेंट पसंद आता है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर न्यू नोटिफिकेशंस। और आप सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं, जिनमें आप हमें अपना सपोर्ट देते हुए अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि सेशंस में क्या कुछ नई चीज़ें आपको ऐड ऑन चाहिए, क्या माइनस चाहिए, लाइक दैट। इसके अलावा अगर आपने वंडरिंग माइंड्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप पर डेली 9 PM फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्विज़ेस कंडक्ट करवाई जाती हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ होती है। और उन क्विज़ेस का बेनिफिट उठाते हुए काफ़ी स्टूडेंट्स ने पिछले 4-5 अटैम्प्ट्स में अपने नेट और जीआरएफ को क्रैक किया है, जो कि अपने आप में वंडरिंग माइंड्स की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। हर टाइम हर अटेम्प्ट में नियर अबाउट 40 प्लस नेट जीआरएफ हमारी जो वंडरिंग माइंड्स की टीम है उनके एफर्ट से बनाए गए क्वेश्चंस से बच्चे उसका बेनिफिट उठाते हुए हर बार क्रैक कर जाते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए प्यारे दोस्तों, मैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करूँगा और हमारा जो आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देखते हैं। द फ्रेज कंडीशन ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चन वाज used by Thomas Carlyle in his long essay Chartism 1839. It refers to the literature of England depicting the vulnerability of labor classes. Read this point, dear learners. Our next and important point on Philip Sidney. Sir Philip Sidney is very important for net point of view, dear learners, and his work. He wrote a work of literary criticism and apology for poetry in immediate response to that of Stephen Gasson's The School of Abuse. It is one of the earliest works of literary criticism in English literature. In this point, you can see the two questions were formed. First is an apology for poetry was written by Sir Philip Sidney, and ये जो वर्क था सर फिलिप सिडनी ने ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा? ये स्टीफन गैसोन के द स्कूल ऑफ एब्यूज के रिस्पॉन्स में लिखा गया, जो अपने आप में एक पीवाईक्यू है डियर लर्नर्स। अवर नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज विजय तेंदुलकर्स बुक साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन is a Marathi play translated into English by Priya Adarkar. Our next and important point, the structural analysis of science was practiced by Roland Barthes. Roland Barthes is very important literary theorist, dear learners, and also favorite of NTA in UGC NET exam. So learn his all works in chronology.
Again, I repeat this point. The structure analysis of science was practiced by Roland Barthes. He is known for his essay, The Death of the Author, is very important for net point of view. Our next and important point is the lost generation called by Gertrude Stern is a name applied to the disillusioned intellectuals and aesthetics of the years following the First World War. Our next and important point about Wallace Stevens' poem, The Man with the Blue Guitar, may be linked to the painting The Old Guitarist by the artist Pablo Picasso. The poem is divided into 33 sections. Learn this point, dear learners. The Man with the Blue Guitar is a poem by whom? Poem by Wallace Stevens. Our next and important point on Alfred Lord Tennyson, which is very important for net point of view. Alfred Lord Tennyson poem in blank verse, Ulysses is a dramatic monologue and its theme is expressing the need for going forward and braving the struggle of life. जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोम है उसमें आपको क्या बताया गया है यूलिसिस में? स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है. अवर नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट सैमुअल बटलर्स नॉवेल एरवॉन्स. Erewhon is an example of utopian literature. The novel is satire on Victorian society and its title is Fictional Country. इसका जो टाइटल है इस नॉवल का, ये एक फिक्शनल कंट्री है डियर लर्नर्स. ये याद रखने की चीज़ है डियर लर्नर्स, इसे याद रखिएगा. ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में लाइक पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्ज़ाम आपको क्वेश्चन फॉर्म में देखने को मिल सकता है ये point. Our next is John Dryden's An Essay of Dramatic Poesy was written to counter the remarks made by the French commentator Samuel Serber about the English stage. Remember this point, dear learners. Our next and important point is sexual possessiveness is a theme of William Shakespeare's comedy A Midsummer Night's Dream. Our next and important point on Northrop Frye. Northrop Frye is a Canadian critic, dear learners. He gained global fame with his first book, Fearful Symmetry, which led to the reinterpretation of the poetry of William Blake. Our next and important point, the figure of the warrior virgin in Spenser's Fairy Queen is represented by the character Britonart. Our next and important point, William Hazlitt's essay, My First Acquaintance with Poets, is an unforgettable account of meeting with literary heroes. In it, he describes his meeting with Coleridge and Wordsworth. In which essay, dear learners, my first acquaintance with poets and meeting with Coleridge and Wordsworth. Remember this. Our next and important point, the figure of the warrior virgin in Spenser's Fairy Queen is represented by the character Britonart. Our next and important point is the concept of star
equilibrium in connection with man-woman relationship appears in D.H. Lawrence's novel Women in Love, which is very important for net point of view, dear learners. Our next and important point about Stephen Dedalus is a fictional character of James Joyce associated with novels A Portrait of the Artist as a Young Man and Ulysses. Ulysses here we read in 2 points, dear learners. Ulysses poem by Alfred Lord Tennyson and novel by James Joyce. Remember this. Our next and important point on Alexander Pope mock heroic narrative poem The Rape of the Lock was published in 1712 in 2 cantos. In this poem, Belinda lapdog is named Shock. डियर लर्नर्स, ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है कि रेप ऑफ द लॉक के अंदर जो बेलिंडा है उसके डॉग का क्या नाम था. उसके डॉग का नाम था शॉक. हियर यू कैन सी दिस पॉइंट. Our next and important point, Stanley Fish criticizes W.K. Vincent and Monroe Beardsley in his essay Literature in the Reader, Affective Stylistics. Our next and important point, the movement New Criticism derived its name from John Crow Ramsden 1941 book The New Criticism. Our next and important point, Stanley Fish's work Surprised by Sin is the first study of a large literary work which is Paradise Lost that focused on its reader's experience. Our last point of this session is, dear learner, on deconstruction is based on Jacques Derrida's philosophical work of grammatology. This work was translated by Gayatri Chakravarti Spivak and introduced by Judith Butler. That's it, dear learners. Thank you for watching, and don't forget to subscribe and take benefit of our daily free quizzes on Telegram group and these type of rapid fire sessions on YouTube platform.